source person. Please, ma'am, please, sir. Dr. Neelam Sharma, ma'am, Professor, Bela College of Pharmacy. Please give a few round of applause. Ms. Jumanpreet Kaur, Assistant Professor, Bela College of Pharmacy. Please, ma'am. Ms. Akanksha, Associate Professor from Bela College of Pharmacy. Dr. Daisy, Professor from Pi. Yes. Please give them a push round. Please. It's a Dr. Prerna Swarnook, ma'am, Principal's wife. She also has a very beautiful smile, so give her a cute clap. Dr. Jaspreet, Principal, City College of Pharmacy. Please, ma'am. Now, I would like to invite our next speaker of the day, Ms. Poonam Gupta, ma'am. She is Managing Director, ImmunoLife Private Limited. I request you, ma'am, to please tell us something about your journey, how you did this. Good evening. After lunch थोड़ा बोरिंग था सबको, बट मैं इसको एक थोड़ी सी स्टोरी बना के आपको समझाती हूँ कि बिकॉज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सभी यंगस्टर हैं, तो मेरे हिसाब से जब मैं इनको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगी तो दे विल फील पैम्पर्ड। तो मैं एक नॉर्मल स्पीच की तरह बात नहीं करूंगी बिकॉज सभी खाने की बात तो सबको नींद आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि आई कॉल्ड एज ए सीरियल एंटरप्रेन्योर। शायद आपने फर्स्ट टाइम की परिभाषा सुनी होगी सीरियल एंटरप्रेन्योर। जब मुझे लास्ट टाइम किसी ने ये सीरियल एंटरप्रेन्योर की परिभाषा बताई थी तो मैं भी बहुत सत्य में हो गई थी कि सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है। बिकॉज मेरा जो बिजनेस है मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है और मेरे 5 वर्टिकल्स है जो मैं 5 वर्टिकल्स चला रही हूँ। सबसे पहले मैं FSSAI के साथ एम्बेडेड हूँ, FSSAI की ट्रेनर हूँ। FSSAI की बेसिस पे मैं कंपनीज में जाकर ऑडिट करती हूँ और लास्ट 25 इयर्स बैक मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जब मैं अभी पढ़ी रही थी। जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान मैं अभी पढ़ी रही थी उसी टाइम पे मैंने आई हैड स्टार्टेड माय करियर as a consultant, ISO consultant की basis पे I had started this venture. After that, 2011 के अंदर जब FSSAI आया तो I had joined in FSSAI and FSSAI की जो मेरी कंपनी है वो embedded training partner है और मैं उसकी ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ। और उसके बाद मुझे लगा जब कोविड काल आया तो मुझे एक बात लगी कि मुझे कुछ अपना भी करना चाहिए क्योंकि मैं डे बाय डे जब भी किसी फैक्ट्री के अंदर जाती थी देखती थी कि वहां पे बहुत सारी अच्छी यूनिट्स लगी होती थी और लोग अपनी इंडस्ट्री को चलाते थे। तो मुझे देख के लगा कि मैं भी अपना एक यूनिट क्यों ना लगाऊं। तो देन 2017 के अंदर आई हैव स्टार्टेड माय वन यूनिट इन द नेम ऑफ लाइफ साइंस।
लेकिन तब तक मैं सिर्फ एक काम करती थी, थर्ड पार्टी, कि कोई भी पर्सन आता था अपनी ब्रांडिंग से मेरे से काम करवा के चला जाता था। लेकिन 2000 का जो पीरियड था, दैट वाज द वेरी क्रूशियल पीरियड, क्योंकि इतना क्रूशियल पीरियड था कि सबने उस दौरान कुछ ना कुछ लर्न किया। तो मैंने एक चीज लर्न की कि जब कोविड आया तो मेरे देना चाह रहा था, तो मुझे ये देख के मैंने एक बार सोचा अपनी फैक्ट्री क्लोज करूं, लेकिन जब मेरे पास मैक्सिमम स्टाफ लेडीज का है, और लेडीज ने जब मैंने उनको कहा कि मैं फैक्ट्री क्लोज कर रही हूं, अब आवाज आ रही है कि नहीं मैम, इसकी कंपनी है अम्बाला में। जैसे आज हमारे डिग्निटरीज ने बताया क्या होता है कि जब आप स्वावलंबी होते हो, इसके बीच में क्या हुआ कि उनके हस्बैंड जैसे किसी ने दारू पी के उनको पीटना या कुछ करना, तो दैट वाज अ वेरी स्मैक टाइप हो गया था। तो मुझे उनकी आंखों में से आंसू जो थे ना, वो मेरी आंखों में आ गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, व्हाई यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन ब्रांडिंग। तो 2020 के अंदर मैंने एक स्टेप लिया और अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। और स्टार्टअप के अंदर मुझे लगा कि सबसे पहली प्राइम चीज क्या होती है, उस टाइम के अंदर मुझे लगा कि मुझे कोविड से रिलेटेड ही कुछ स्टार्ट करना चाहिए। अभी आप कहोगे यू ऑल आर यूथ, बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तो 50 प्लस के अंदर आ गई हूँ। तो मैंने तब भी उस टाइम पे कोविड के दौरान इवन मेरा कोई स्टाफ मेंबर नहीं आता था। आपको पता है पूरे लॉकडाउन के अंदर इवन मेरा ड्राइवर भी नहीं आता था। मैं अपनी गाड़ी लेके कभी एसडीएम कभी डीसी इन सब के पास पहुंची थी। और उसके बीच में मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया एक तुलसी इनहेलर, कि जिसकी प्रोटेक्शन क्या, वो तुलसी के अंदर इनहेरेंट कुछ गुण होते हैं जो कि एंटी एलर्जिक एंटी बैक्टीरियल गुण ऐसे होते हैं कि उसको जस्ट स्मेल करोगे तो वो आपके जितने बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरे घर के अंदर भी कोविड आया, मेरे फादर इन लॉ को कोविड हुआ, मेरी बिटिया एमबीबीएस कर रही थी और वो चाइना से कर रही थी, उस लॉकडाउन के अंदर वो भी वहां यहाँ फंस गई। तो उसने मेरा पूरा घर संभाला। जब मेरे फादर इन लॉ को कोविड हुआ तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप ये इनहेलर का यूज करोगे दिन में 3 या 4 बार, और डबल मास्क पहन के आप दादू को खाना खिलाओ। एंड वी वर सक्सेसफुल। वो 1.5 महीना मैं और मेरी बिटिया हम दोनों बड़े सक्सेसफुल रहे, और मतलब हमें किसी रिश्तेदार को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तब मुझे उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस समझ में आई, और उसके बाद मेरे पास और कोविड के पेशेंट आए तो मैंने उनको भी दिया ये प्रोडक्ट। तो उसके बाद काफी अच्छा लगा। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं को दिखाने का समय मिलता गया। जैसे प्रगति मैदान में हमें एमएसएमई वालों ने फेयर दिया एक स्टॉल लगाने के लिए, तो मैंने वहां पे एग्जिबिट किया, तो वहां पर फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो एंटी पोल्यूशन की गुण है इसके, बिकॉज जब आप पोल्यूशन से बाहर आते हो तो आप कभी कभी एक टीवी की एड में देखते होंगे कि जब आप अंदर आते हो तो पीछे पीछे कुछ बैक्टीरिया आपके साथ होते हैं, तो जैसे आपने इनहेल किया तो सारे बैक्टीरिया डाउन हो जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये तो पोल्यूशन के अंदर भी बहुत अच्छा है। मेरे पास 1-2 जापानीज और जर्मन से जो कस्टमर्स थे, उन्होंने वो मेरे से लेके भी गए। इवन ऑस्ट्रेलिया से जब किसी ने अपने बच्चों को भेजना था तो वो 100-200 के आसपास इकट्ठे लेके जाते थे। अब जैसे मेरी बिटिया चाइना गई हुई है तो उसको भी मैंने 100 इनहेलर भेजे हुए हैं, कि ताकि चाइना में, जैसे अभी आप पीछे सुन रहे थे कि चाइना में बहुत बैड स्थिति चली थी, तो मेरी बिटिया तो अक्टूबर में चली गई थी। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट, बिकॉज उसका यूजेस मैंने खुद किया, मैंने खुद बनाया और खुद उसको यूज करके देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बहुत सार्थकता पूर्ण है और मैं इसका अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट में देख सकती हूँ। इन बिटवीन साथ के साथ मैंने 2019 में अपनी एक एनजीओ स्टार्ट की थी, और जिसका मेरा मेन एम है फूड सेफ्टी और एनवायरमेंट सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर। उसके साथ साथ हमारे कुछ ना कुछ चीजें जुड़ती गई। जैसे आपने देखा इस बार सर्दियां बहुत थी, तो सर्दियों में हमने कुछ जगह पे जाके देखा कि वहां पे बच्चों को सॉक्स नहीं थी, कैप्स नहीं थी, तो हमने सोचा कि कोऑर्डिनेशन की ड्राइव भी न की जाए। तो ऐसे मेरे 4-5 वर्टिकल्स चल रहे हैं जिनको मैं देख लूं। तो अब फेमिनिज्म की बात आज हमारे यहाँ पे करते हैं। फेमिनिज्म क्या है? तो मैं फेमिनिज्म की बात कहती हूँ कि शायद मुझे तो नहीं इतनी इस एज में नहीं ज्यादा आइडिया था, क्योंकि हम तो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज करते गए और अनमैरिड टाइम से मैं वर्क करती गई। लेकिन मेरी बिटिया ने मुझे सिखाया कि फेमिनिज्म क्या होता है। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसने आज वो चाइना से बैठ के मुझे पूरा सपोर्ट करती है कि अगर कोई फ्री टाइम होता है तो मैं उसको बोलती हूँ, वो मुझसे पूछती है मम्मा आप क्या करें,
तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो कहती नहीं मम्मा आपका ये एनजीओ का टाइम है, आप एनजीओ को दो। तो अभी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करती हूँ। जैसे इस बार का जो ईयर है तो मिलेट ईयर के नाम से जाना जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करें, हमारा पहला इवेंट होने जा रहा है 18 को मुलाना में। तो मैं ऐसे चाहती हूँ सभी कॉलेजेस के लोग हैं, जैसे आपके गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के अंदर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, मिलेट मेला को लेके लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इवन आपको ये भी पता है कि दूध से भी बीमारियां बढ़ रही है। तो अभी दिक्कत होती है कि दूध कैसे दे, तो दूध देने की मुझे लगता है किसी बच्चे को ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज दूध की वजह से कोई कैल्शियम नहीं मिल रहा, जो उल्टा उस दूध के साथ हमें शुगर कंटेंट बढ़ रहा है और उसके साथ 10 बीमारियां और आ रही है क्योंकि उसको प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं किया जा रहा। और ये फ्लेमिंग बन रही है कि ये दूध इतना हानिकारक है कि किसी दिन जानलेवा भी हो सकता है। तो ये हमारा R&D जो चलती है ना, ये हमारी ये ट्राइब कैंपेन के अकॉर्डिंग हमारी FSSAI की काफी सारे इनिशिएटिव है, जिसको अल्टीमेटली गवर्न करता है हेल्थ, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इसको गवर्न करती है। तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और मोदी जी ने इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया हुआ कि मिलेट ऑफ द ईयर, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो हमारे देश के अंदर जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम। और अब ऐसे हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हरियाणा में भी बहुत पीछे है, अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, वहाँ काफी सारे मिलेट्स मेला हो चुके हैं। तो अब मेरी एनजीओ ने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया कि हम यहाँ पे कुछ मिलेट्स के बारे में लोगों को अवेयर दें कि आप सिर्फ गेहूं को मत चूज करो, क्योंकि गेहूं के जीन्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं और उसी गेहूं की वजह से हमारी 10 बीमारियों की जड़ है। तो हम उसको ये चाहते हैं कि जब जो चीज मिले, जैसे रागी है, रागी की इडली खा सकते हो। अभी मैंने एक ईट राइट मेला करवाया था लास्ट दिसंबर के अंदर करनाल के अंदर, तो यू विल प्लीज टू नो कि बाजरे की नूडल्स बनाए हुए थे एंड दैट वाज वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि फूड सेफ्टी की बात करता है कि आप जो कुछ भी खाते हो तो उसकी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये मेरी कुछ एक्टिविटीज फूड सेफ्टी के अंदर भी रहती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बिकॉज ऑलरेडी सबने बहुत कुछ बोल दिया है, मेरे पास बोलने लायक कुछ राय नहीं। एंड सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ आज आके ये लगा कि मेरे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आई है, बिकॉज आप सब टीचर्स हो और टीचर से हमेशा एक एनर्जी मिलती है। और आप लोगों ने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि वो कहीं ना कहीं हमें पिन पॉइंट करते हुए बोल, हमें पिंच होता गया और हमें लगता गया कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। और मैं आप सब बच्चों के साथ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सब बच्चे सोशल मीडिया को बहुत यूज करते हैं, तो जिंदगी में एक चीज करो कि काम ऐसे करो कि तुम्हें कोई ब्लॉक ना करे, तुम्हें कोई सर्च करे। तो ये सबसे बड़ा है, आप हर काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें सर्च करें। और कभी भी स्पीड आपकी स्लो हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपने डायरेक्शन ठीक पकड़ ली तो स्पीड में हो सकता है कोई 6 महीने आगे चले जाए, कोई 6 महीने पीछे चला जाए। और आपके पास इतनी बढ़िया कोर टीम है आपके टीचर्स की, तो आप इनसे गाइडेंस कीजिए। और मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी एनजीओ की एक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कागजी बातें कर रही हूँ। अभी सर के साथ मेरी बातचीत चल रही थी कि वो उस लेडी ने कौन सा बेनिफिट लिया, मैंने कहा कि सर मैंने आया है टिकट पे। तो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ के निकलते हो, कुछ लोग फाइनल ईयर के भी होंगे। अगर आपको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ काम करना है तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट योजना है, जिसके अंदर 50,000 का लोन है। 50,000 में से 35% आपको सब्सिडी है वुमेन्स को, अगर वो अपना सेटअप रूरल एरिया में करते हैं। और स्टार्टअप के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे इनिशिएटिव है कि इस इनहेलर के ऊपर मुझे अभी लास्ट में 5 लाख रुपीज का प्राइस मिला उस इनहेलर के। लगता है मेरे अंदर थोड़ा सा काम करते बचपना आ गया और मुझे लगा कि मुझे भी इस दौड़ में आपको शामिल होना है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी कुछ करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीजों के बेनिफिट्स आप लीजिए। और इन चीजों के बेनिफिट अगर आप लेनी है तो मेरा नंबर यहाँ पे प्रेरणा मैडम के पास, गौरव सर के पास ऑलवेज अवेलेबल है। मैं आप लोगों के स्पेशल भी आ सकती हूँ कि आपको इन योजनाओं के बारे में, इसको अप्लाई कैसे करना है। और इवन हमारे जो स्टेट डायरेक्टर है हरियाणा के, वो भी मेरे बड़े अच्छे वेल नोन है, वो अम्बाला में उनका ऑफिस है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक है, हम उनका कुछ कर नहीं सकते, हम डरते हैं कोई कदम बढ़ाते हुए। ठीक है, तो वो कदम बढ़ाने आपने, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि सरकार के इतने ज्यादा बेनिफिट है।
आजकल आरबीआई ने बैंकिंग को इतना स्ट्रिक्ट किया हो कि आपको इतने लोन करने ही करने हैं। अभी डॉक्टर गौरव से मेरी बात हो रही थी कि जितने लोन्स निकलते हैं या जितनी योजनाएं निकलती हैं, में हम गुड पॉलिसी लेकर तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट वाले कभी नहीं करेंगे। जो करना पड़ेगा वो सब हमें खुद को करना पड़ेगा, हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा, हमें खुद को जाके काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम अपने आप को जागरूक नहीं करते, मैं एक बार बहुत पहले मुझे किसी सेमिनार में इनवाइट किया गया एमएसएम के, तो मुझे भी एक चीज लगी कि मेरा टाइम बहुत वेस्टेज है कि मैं एक दिन में जाके क्या कुछ नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा था कि जिस काम को हम करते हैं उस काम के लिए क्या हम एक दिन नहीं दे सकते? क्या हमने अपने काम को बढ़ाना है तो एक दिन तो देना चाहिए ना। तो एक दिन देने का मतलब है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये गलती की एचएमडी ने। एचएमडी सबको मालूम है ना, एचएमडी ये हाथ की घड़ियों की, सबको पता था कि आने वाले टाइम में मोबाइल में सबका ले लेना है। वो इवन आप पैड भी ले लेना है, आपकी पेन्स भी ले लेने हैं, आपकी वॉचेस भी लेनी है। आप दोबारा से डिजिटल वॉच का जमाना आ रहा है, आप बच्चे को पहनना पसंद करें। तो एचएमडी के अंदर मोर देन 50,000 एम्प्लॉयज थे जो कि बेघर थे। तो हमारी एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमें समय रहते रहते ये सोचना चाहिए कि हमें कब कौन सा एक्शन लेना है, टाइम के अनुसार अपने एक्शन को चेंज करते रहना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज सीरियल। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा सेक्शन है जो तुलसी हेनर की आप बात कर रहे हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट, मतलब तुलसी का एक्सट्रैक्ट सेक्शन मशीन लगाई। पहले मैं तुलसी एक्सट्रैक्ट लेती थी, फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी। कई बार मैं साउथ से मंगाती थी, उसके तुलसी की शॉर्टेज की थी और यहाँ के तुलसी की शॉर्टेज। तो नाउ आई हैव सेक्शन प्लांट, छोटा एक प्लांट लगाया, उससे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको ये होगा। Thank you very much, ma'am. It was very nice listening to you. And you are an inspiration for all girls students who want to be entrepreneurs. So now I would like to request our principal sir, Dr. Bhavna, to please facilitate our ma'am. Please, ma'am. I would like sir to please felicitate Miss Monica from Lala Bilkharam College of Pharmacy, Barwala. Thank you very much, sir. Now it's time to introduce our next speaker of the day, Dr. Kamala Pathak ma'am. She is Dean and Professor, Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Sefai, Uttar Pradesh. And she is my mentor also. And I think she needs no introduction in the field of pharmacy. She has guided about 120 plus researchers in MPharm thesis, also including PhDs, and she has 270 plus publications. So her profile speaks much. So I request ma'am to please take over. Can I start? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Priyanka, for having me in the event. I tried my best to be with you physically, but unfortunately, I think the Indian Railways did not help me, they did not cooperated me. So when you were like little disappointed, so I offered this opportunity for being online and joining you, right? The point is, my thoughts should reach your seminar. That is more important rather than me, right? So I'll use my PPT to
but you have disabled screen sharing. You'll have to allow me that. Yes, ma'am. Screen sharing allowed कर पहले. Yes, ma'am. We are allowed. Okay, let me try. Okay. So, because I was not present in the conference, I mean, in the seminar, physically, so I don't know what the speakers have spoken about, but I'm sure they must have spoken about the empowerment side of the women, right? The achievers, the success they have achieved, all those. But what I want to speak is an important empowering tool, which every woman should know, especially those who are working at a organization. So I would like to talk about prevention of sexual harassment at workplace, which is which is a scheme of India government. And more importantly, I chose this topic because in this university, that is Uttar Pradesh University of Medical Sciences, I am the chairperson of the committee made to prevent the sexual harassment at workplace. And because I have hands-on experience, I learned the importance of this tool. So I would like all of you who are present here, the faculty members, the students who are present here, please take a careful note of what I'm talking to you. This is a very important tool. I don't say that you may need it, but you never know, right? Now, if we talk of sexual harassment, according to me, the most abusive sexual harassment was that of Draupadi. And she was actually in a court, which was the workplace. She was attempted disrobing, right? But as the tale says, we had Krishna to save her. So according to me, this is the most abusive sexual harassment in our history. And it happened in a court full of not of strangers, but the people who were close to her, especially her husbands, her in-laws, everybody were present here, but nobody saved it. And when a working woman enters into the workplace, she is not surrounded by relatives. She is surrounded by strangers. And there she has to maintain her dignity, her enigma, her energy, and put in 100%. Now, during this working, she may encounter certain things which are unpalatable. So let's talk about those unpalatable things, how they can be handled, and this will empower the women. And I have dealt, when I was given the charge of being the chairperson of the committee, I thought that I'm working in a medical university where everybody is so educated. Why would there be cases of any kind of harassment? But to my surprise, I get regular complaints of such. But sexual harassment doesn't always mean some kind of physical harassment. Now, let me make you understand what does sexual harassment means, what is my understanding till date. So how did this concept came into being? The Supreme Court of India, in a landmark judgment in August 1997, which was Vishakha versus State of Rajasthan. Now, Vishakha is not the name of the lady. Vishakha is basically 5 NGOs joined together. They grouped their name, they grouped together and named themselves as Vishakha. And they fought the case of Bhavari Devi, who was a social worker who tried to prevent child marriage of 9-month-old girl. For that, she was gang raped by 5 people in front of her husband. And then the story started, where Vishakha versus State of Rajasthan was taken, the case was taken up by Supreme Court of India. And while the case was reviewed and the judgment was passed, it was stated that every instance of sexual harassment is a violation of fundamental rights under the Articles 14, 15, and 21 of the Constitution of India and amounts to a violation of right to freedom under the Article 19(1)(g). So this is what the Supreme Court said.
that sexual harassment is violation of fundamental right. Remember this. So, based on this, Supreme Court judgment and the guidelines were issued in 1997. The guidelines, why they were issued? They were issued for effective enforcement of basic human right of gender equality and guarantee against sexual harassment and abuse. More particularly, the UGC has also issued circulars since 1998 to all the universities, advising them to establish a permanent cell and a committee. What is the function of these two? They will develop guidelines to combat sexual harassment and violence against women and ragging at universities and colleges. So basically, there are 2 points what I want to emphasize. The Supreme Court has issued an order, but the Supreme Court order has to be translated into the organization. That is why the UGC has issued the guidelines. Then there was another Supreme Court judgment in January 1999, wherein a lady, it was against the company which was Apparel Export Promotion Council versus a girl with a title Chopra. And she was also harassed sexually. She took the matter to the court, and then based on the matter, Supreme Court said that sexually harassing behavior needs to be eliminated as there is no compromise on such violations. And then further, Supreme Court emphasized that sexual harassment is a violation of fundamental right to gender equality and the right to life and liberty. Now, these are very important things, you should understand each and every word very clearly. The girls and the women have the life to live, they have the liberty to live the life, and they should always enjoy the gender equality. So based on these things, it was made mandatory that in each organization, an anti-sexual harassment cell has to be made functional with at least 2 senior women faculty on the committee. And then an anti-sexual harassment policy is to be made by the institute or the organization or the university. Har university, har organization ko apni policy banani hai, anti-sexual policy. And that policy needs to be displayed on the website. So if in your organization it is functional, well and good. If it is not, then make it and put the policy, prepare a policy of that committee and post it on the website. Now, what is sexual harassment? Sexual harassment includes any unwelcome sexually determined behavior, whether directly or by implication, if it implies as physical contact and advances, a demand for Ma'am, sorry to interrupt you, ma'am, slides are not moving. They're not moving. As the slides are not moving, ma'am. It should be slideshow, ma'am. Please click on that. Is it visible now? Now it's okay. 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 So I would like to define sexual harassment. Sexual harassment means it includes any such unwelcome sexually determined behavior, which is either direct or by implication, as a physical contact and advances, a demand for request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature. So there are 5 categories of sexual harassment, and you should keep it in mind. Now, what is not sexual harassment? Within the limits following are acceptable and not considered as instances of sexual harassment, which are performance counseling. Anybody who does well or is not able to do well, you can have a counseling session. That is not sexual harassment, right? Social interaction, you're enjoying a function at the organization, showing concern. If anybody shows concern, how is your health? That is not sexual harassment. Polite compliment that you're looking good, you're looking beautiful today. That is not sexual harassment. Friendly conversation and encouragement. When a male boss is encouraging you, that doesn't mean that he's sexually harassing you. So what I said is that we need to declare a policy. Every organization needs to declare a policy. So we at this university have declared this policy. Uttar Pradesh University of Medical Sciences, SAFAI, shall value the dignity of every individual, enhance the development of its human resources, guarantee full
full respect for human rights, ensures the full enforcement of fundamental rights under Articles 14, 15, 19, and 21 of Constitution of India, and uphold the dignity of workers, employees, applicants for employment, students, or those undergoing training, instruction, or education. So every aspect has been covered. The faculty members, the students, all are included. And even if it is education or instruction or training program, nowhere sexual harassment is tolerable. So we at the university have declared that all forms of sexual harassment in employment, education, or training environment are hereby declared unlawful. Unlawful means they will be punishable. So what is the objectives of the policy? Why we have declared this policy? Because we have to fulfill the directive of Supreme Court, as well as implement the UGC directives. You know, the UGC has also given the directives for prevention of sexual harassment in the institution. So we need to evolve a mechanism of prevention and redressal of sexual harassment cases and other acts of gender-based violence in institution. Nothing is tolerable. And to ensure the implementation of policy in letter and spirit, that is, you have to make a policy and you have to display it on the website through proper reporting of complaints. And when you're declaring a policy, you have to listen. You have to listen to the complaints and find a solution. Another objective is to provide an environment free of gender-based discrimination. Then to ensure equal access of all facilities and participation in the activities of the college, institution, or university. To create a secure physical and social environment that will deter the acts of sexual harassment. And to promote a social and psychological environment that will raise awareness about sexual harassment in all forms. So these are the objectives. They should also be displayed on the website. Now, how do you define where the university or the organization has to take action? You must know the jurisdiction. So what are the clauses? First, any member of the institution, any member of the institution, if he harasses any other member of the same institution, right? Then whether the harassment has taken within the campus or outside the campus, it calls for a listening. It calls for a action. Second clause is if there is a member who is outside the organization or the university and he has been harassed by a member of the university. So there's an outside member, which is not a part of the university, any member, but he has been harassed by the member of the university or your organization. Then if the sexual harassment has been taken in the campus, let me simplify. कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है एम्प्लॉय, उसने बाहर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट बिहेवियर ऑब्जर्व किया है और वो जो एक्शन है वो आपके कैंपस में हुआ है, तब भी आपको एक्शन लेना है. एंड द थर्ड क्लॉज इज इफ बाय अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी टू एन आउटसाइडर इफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द कैंपस. मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी मेंबर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है विद इन द कैंपस, आउटसाइड द कैंपस, और टू द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड मेंबर, इन ऑल द थ्री केसेस यू हैव टू टेक एन एक्शन. So what action should be taken? The committee shall recommend that the authorities take initiative by making a complaint with the authority. पहले तो आपको complaint lodge करनी पड़ेगी, and then the committee will actively assist and provide resources to the complainant to pursue the complaint. So first is you have to form two committees. One is anti-sexual harassment committee, which will have a presiding officer who shall be a woman, faculty member employed at the senior level. Then you should have two teaching employees and two non-teaching employees, preferably for the cause of women and who have an experience of social work or legal knowledge. And then at least 3 students, each from UG, PG and PhD levels, and 1 member from non-government organization who has a cause for women. So you can make a composition of this committee, and the purpose of this committee will be to ensure provision of work and educational environment that is free from sexual harassment, like offending, humiliating or intimidating. Darana bhi nahi hai. Darana bhi is also sexual harassment. To take active and preventive steps to prevent harassment,
and to obtain high-level support from the head of the institution. Unless and until the head of the institution supports, the committee cannot work. And what will the committee do with the support? It will explain what is sexual harassment, and it will explain the staff and students not to indulge in sexual harassment and to maintain their responsibility to maintain a sexually free environment. Sexual harassment free environment. And then they need to develop a written policy, and they review the policy periodically. So the functions of the committee will be preventive and remedial. Preventive मतलब एक environment create करिए कि लोग ना करें, ठीक है. और दूसरा remedial steps मतलब आपको जब भी कोई ऐसा केस होता है तो उसको हैंडल करना, उस पे एक्शन लेना, और अगर जरूरत हो तो लीगल हेल्प लेना. So what the committee can do is it can display posters on notice boards, common area works, and distribute relevant brochures against sexual harassment, and conduct regular awareness raising sessions for all staff on sexual harassment issues, and ensure that all the complaints are properly documented, they are resolved in a confidential matter, and a report is prepared and submitted to the higher authority. These are the functions. Now, apart from this anti-sexual harassment committee, we should have an internal complaints committee. Now, this is the action committee. And when we design an internal complaint committee, it is very necessary that the chairperson of the committee should be a woman who has the highest position in the organization. Otherwise, she'll not be able to carry out the responsibility, especially if the accused is also a senior person. So that is very important. And the members of the internal complaint committee can be up to 10, but whatever be the composition, 50% should be females. And when the ICC is functioning, remember the ICC is a part of a education system. It cannot function as a criminal court. We are not there to prove that the accused is a criminal. And we should also remember the complainant, who is the woman, when she complains, has at stake her personal life and career. The impact of the sexual harassment on women is much. That should be kept in mind. And it is difficult for a woman to talk about anything sexual. Hence, there can be a long time interval between the harassment and the actual complaint. So what we need to do is we have to handle the complaints in confidential manner, and in a time-bound framework. And then the report should be submitted to the government authority. आप जो भी काम कर रहे हैं for this purpose, because the government is very particular about it. So the entire academic year की report आपको submit करनी पड़ेगी to the local district officer. So these are the powers of the committee, that they can call the witnesses. There's too much of text, I'll shorten it. They can call the witness, document anything. They can use the recordings, camera recordings, or any other electronic device which is present. And any other, कोई भी witness बुला सकते हैं. अगर accused कहता है कि उससे पूछ लो, 10 लोगों को बोलता है कि उससे पूछ लो कि मेरा behavior ठीक है, तो you have to call all those 10%. Likewise, जो complainant है, उसने भी अगर कहा है कि these are my supporters, you have to call them and record the evidence. जो भी वो बोल रहे हैं, उनको clearly writing में देना है, and that should be kept, retained and in a confidential manner. And then जो internal complaint committee है, it is not going to act as a court. They are not giving decisions. They will compile a report कि इसने accused ने ये कहा, complainant ने ये कहा, witnesses ने ये कहा, right? On the basis of that, they can suggest कि हम क्या direction या क्या action ले सकते हैं, but they cannot give a decision. Is it clear? Accused को आप ये नहीं कह सकते कि आपकी हम promotion रोक देंगे या increment रोक देंगे. That cannot be done by the internal complaint committee. It can be recommended to the head of the institution, and the head of the institution will take an action on it. So what is the procedure to be followed by the internal complaint committee? जब भी कोई complaint आएगी, तो the committee will meet, and then the complainant will prepare, the committee will ask the complainant to prepare and submit a detailed statement of incidents. उसने कंप्लेंट तो की है, पर लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्लेंट में बहुत कम लिखते हैं. जब आप उनको बुला के पूछते हैं तो बहुत ज्यादा बताते हैं. I have seen this, you know, because I am the chairperson of this committee, so I have actually talked to the complainants.
तो वो जब बताने पे आते हैं तो बहुत ज्यादा बताते हैं, कंप्लेंट में बहुत कम लिखते हैं. तो यू हैव टू हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड. देन लाइकवाइज जो एक्यूज्ड है उसको भी बुलाना है, एंड देन ही शुड आल्सो बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट हिज साइड. एंड दिस ऑल दिस एक्टिविटी शुड बी डन इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन जब आप एक्यूज के ऊपर बता रहे हैं कि आपको कंप्लेंट की गई है आपके अगेंस्ट, तो आपको कंप्लेंट की कॉपी देनी पड़ेगी एक्यूज को कि क्या कंप्लेंट की गई है. देन द एक्यूज विल बी एबल टू डिफेंड. एंड देन यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, give opportunity to both the parties to present the case, and if the accused chooses not to participate, you can continue the proceedings even in his absence. So both the parties will present the documents, and if the parties ask that we want to see what the other party has written, you have to give it to him or her. एक्यूज की जो कंप्लेंट है वो भी, एक्यूज का जो डिफेंस है वो भी आपको कंप्लेनेंट को देना, और कंप्लेनेंट ने जो भी लिख के दिया है वो एक्यूज को देना. एंड देन द कमिटी शुड विल सिट ऑन डे टू डे बेसिस एंड कंसिडर द एविडेंस, एंड देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड देन लेटर ऑन टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. नाउ टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ही जो कंप्लेनेंट है वो बहुत टाइम लेगी आपको बताने के लिए, बिकॉज इट्स अ हैरेसमेंट. It is not an incident. Harassment is a long-term process, जिसमें रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो हो सकता है मैग्नीट्यूड या तो बराबर हो या ज्यादा हो गया हो. तो दैट टाइम वो ऑलरेडी लॉस है. तो आईसीसी को जो प्रोसीडिंग्स करनी है वो जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए. एज सुन एज द कंप्लेंट इज रिसीव्ड, विदिन 15 days they should try to call the witnesses and all those things. जो भी उनको हियरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन विद इन द नेक्स्ट 15 or 7 days, वॉट एवर आपकी पॉलिसी के ऊपर है, उसमें आपको रिपोर्ट तैयार करके यू हैव टू सबमिट इट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स, इफ एनी पर्सन इज ट्राइंग टू हैरेस द कंप्लेनेंट, अगर वो विमेन को प्रेशर डाल रहा है या इंटिमिडेट कर रहा है और आपको पता लग रहा है, तो दैट शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड टू द और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. नाउ if it is concluded कि ये एक केस था जिसमें कि harassment हुआ है और इसके चांस है कि ये दोबारा हो, then on the request of the complainant or otherwise a disciplinary action can be initiated. What are the actions? ये disciplinary actions हैं, right? Warning, written apology, bond of good behavior, adverse remarks in the ACR. ACR government sector में तो बहुत valuable होती है. Debarring from supervisory duties, denial of membership of statutory bodies, denial of re-employment, re-admission, stopping of increments or promotion, denying admission to the students, reverting or demotion, suspension, dismissal, and any other mechanism. जो भी organization में mechanisms हैं वो आप use कर सकते हैं as a disciplinary action. And this is what I told कि अगर there are two important aspects कि अगर कमेटी को during the proceedings ये पता लगे कि कोई आदमी जो है complainant, that is the woman को pressurize कर रहा है to withdraw the complaint और धमकियां दे रहा है, तो उस केस में उसको रिपोर्ट करना है, that is to be reported. And दूसरी चीज क्या है, अगर during the proceedings if the committee comes to know that जो भी harassment के charges हैं वो fake हैं, they are fake charges, then also the same should be reported to the head of the institution. So the purpose of internal complaint committee is to help. So what for that you need to speak out and your voice matters. That should be the assurance part, and the internal complaint committee will listen. So then you have to prepare an annual report, where the chairperson of the committee will prepare an annual report at the end of each academic year, giving a full account of activities during the year, and a copy of report will be sent to the district officer. So these are the, this is the format of the annual report: the number of complaints of sexual harassment received in a year, number of complaints disposed of during the year, number of cases pending for a year than 90 days, number of workshops or awareness program against sexual harassment carried out, and nature of action taken by the employer. So these are the main components of the annual report which should be prepared and submitted. So these are the reference which I use for preparing this presentation. And
I would like to say something, take home message. Dear women, unless you fight for what is right, unless you stand up when someone wrongs you, no one will. You are the best soldier. This has been said by Strilingo. What I want to say is that उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. You have to be your own Krishna. You have to be your own Krishna. Help yourself and have a happy workplace. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. Welcome. Welcome. Yeah, I can hear you. I Thank can you hear very you. much, ma'am, for the wonderful piece. And throughout the day, actually, everyone talked that what is women empowerment and we should empower ourselves in all this, but this topic was not touched by anyone. So Yeah, it I was knew that. very nice, and actually we also don't know that what are our rights, what are the policies at the workplace we are to follow. We are always scared of what to do and what not to do. We don't know about that. So thank you very much for elaborating that. And most of all, thank you very much for your mere presence only. It means a lot to me. Thank you very much, ma'am. So can I leave? Hello, can I leave the presentation or you have anybody has some questions for me? Anybody have questions regarding that? Regarding the proceeding of the cell? No, ma'am, that's your question. It's a shock. Thank you. Thank you very much, ma'am. Your presence means a lot to me. Thank you very much. Yeah. Thank you very much to Guru Gobind Singh College of Pharmacy for being allowing me to be a part of this event, and I appreciate because and I really congratulate you for conducting a national seminar on this topic, the women empowerment. This is very necessary, right? Thank you so much. Thank you very much, ma'am. So can I leave now? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Dr. Ashwini, please felicitate some of our resource person, please, sir. Dr. Shilpa Shinde. Ms. Shivani Bhatia from Ganti Institute of Pharmacy. Ms. Vishakha from Ganpati Institute of Pharmacy. She is one of our Global Research Institute of